In this video, we are going to discuss another part of the digital logic, that is your number representation in computer. So, in the last video, we discussed types of Boolean algebra, Boolean laws, and how to solve the Boolean function by using your Boolean laws and K-map. Okay, this part is already completed. So, here we discuss the number representation in computer. In computer, we have basically two ways to represent a number. Okay, one is your number is your integer number, second one is your real number. Okay, so integer number means it includes your minus value, all the minus, okay, 0 and plus value. These three things are included in your integer number system. And in your real number system, all the irrational and rational number system, that means our fraction part, all the irrational number, that means 1.32 bar. So this is a irrational number. A rational number means 1.3, okay, which can be formed in the rational form. So all these things, irrational number and rational number, are under your real number. Okay, so basically the number in your computer is divided into two parts, integer part and the real number part. Again, integer is divided into two types, unsigned and signed. Unsigned means when sign is not given. Suppose here written only 4. Okay, that means here sign is not given, that means it is unsigned. But when sign is given, that means suppose I am writing plus 4 or I am writing minus 4. So here sign is given, that means it is your sign integer. So in the same way, real number is represented into two types, that is your fixed point and floating point. Okay, so what is fixed point and floating point, how the real number are represented, we discuss in your another part. Okay, so first we discuss what is integer and how the integer are represented in your unsigned and signed number. Okay, so integer is represented in computer in two way, that is your unsigned and signed. Okay, if we have unsigned, that means if your signed is not given, if we have n bit to store unsigned integer, then range will be 0 to the power n minus 1. So this is the range for unsigned integer. That means suppose I am storing 1 byte. Okay, so 1 byte equal to 8 bit. Okay, suppose I am storing 8 bit, then the range will be 0 to the power 8 minus 1. Okay, that means 0 to the power is 256, 256 minus 1, that is equal to 255. So this is the range, and the total number is 0 to 2, 0 through 255, that means it is total number is my 256, but the range is 0 to 255. Okay. So suppose a question is given, suppose you have 12 bit to store unsigned integer, the range will be dash. Okay, so तो हमको स्टोर करना है 12 बिट. 12 बिट का मतलब क्या होता है, टू द पावर 12. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टू द पावर 12? टू द पावर 12 इज 4096. ओके, बट यहाँ पे गिवन क्या है, रेंज. तो रेंज का मतलब क्या होता है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 4095. So correct option is your B. Okay, so this is for your unsigned integer. For signed integer, okay, so for unsigned there is no issue. Okay, for signed, if MSB is 0, so we check the MSB. So this is your most significant bit. Okay, MSB means most significant bit, LSB means least significant bit. Okay, so it depends on the MSB value, whether it is a signed number integer or unsigned or positive sign or negative sign. This depends on this value. Okay, that means, so to represent this thing we have three method. Okay, SMR, sign magnitude representation, 1s complement and 2s complement. So these three method are basically used to represent signed integer. Okay, so let us discuss one by one. First one is your SMR. Okay, so in SMR, representation for positive integer, let plus 25. So plus means it is your signed 25. So how it represent? So your MSB must be 0. So MSB में अगर 0 होगा then it is represent a positive number. Okay, so what is the value of 25? 11110001 is my 25 value.
because we are representing it in your 8 bit, so here I am taking extra 3, but here 1 is always taken extra because it represents the MSB, most significant bit, that is your sign bit. Okay, that means here 0 indicate it is a positive number. Okay, representation for negative integer, that is minus 25. Suppose I am taking value minus 25, then this MSB value, here MSB is 0 and it will change to 1. So here MSB 1 and rest are your same. Rest जितना भी हमारा number है सब same है. Okay. So what is the disadvantages of SMR? SMR is that here we have two different representation of 0, that is plus 0 and minus 0. So plus 0 is represented as 80, but when minus 0, that means it changes to 1. So actually we don't have plus value or minus value for 0, we have only 0. Okay, so this is the disadvantages of SMR, in which plus 0 and minus 0 have different number. Okay, so this is the disadvantages. Next is your 1s complement. So in your 1s complement, for positive same, that is sign bit is 0 and the next bit contain the binary number. For positive number it is same, there is no any change in your for representation of positive number. For negative number, first binary number then convert 1 to 0 and 0 to 1. So 1s complement क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जितने भी 0 है उसको 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट करते हैं. See here, 1 is converted to 0, 0 is converted to 1, 0 is converted to 1, 1 is 0, 1 is 0, 0 is 1, 0 is 1, 0 is 1. Okay, so here we get minus 25. So same problem is occur in here also. So for plus 0, we have a number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. For minus 0, we get what the number will be 1 1 1 1 1 1 1 4 8. Okay, 4 8 1. Okay, that means here also we get the two representation for number 0. So this is the disadvantages of 1s complement. Okay, so here a question is given, find SMR and 1s complement of 36. Okay, 36 को आप SMR और 1s complement में represent करो. So this is a question. Okay, so for plus 36 we have an so how we get the binary value, 36 को हम divide करेंगे 2 में. Okay, this will give you 1 8. So this is 0, again we divided by 2 and this will give 9, this is 0, again we divided by 2, this will give 3, sorry, this will give 4 and this will our remainder is 1, then this will again divided into 2, 0, then again it is divided by 2 where you get 1 and this is 0. So result is 1 0 0 1 0 0. Okay, 1 0 0 1 0 0. So we take the value from lower. Okay, from it is a bottom of, नीचे से हम वैल्यू को लेते हैं. ओके, सो एक्स्ट्रा बीट इज एडेड फॉर द साइन बीट. ओके, सो एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे 2 बीट लिया है, तो दिस इज फॉर योर साइन बीट. यू टेक 1 बीट ऑल्सो, अगर आप ये बीट ना लेके इतना भी लेके तो चलेगा, लेकिन 8 बीट नॉर्मली हम क्या करते हैं, 8 बीट 16 बीट टाइप का हम वैल्यू लेते हैं, तो वी टेक द बीट 0 0. ठीक है, कैलकुलेशन में इसका कुछ असर नहीं होता. So when the value is minus 36, that means this MSB is changed to 1 and the remaining are the same in case of your SMR. Okay, but in case of your 1s complement, so this will plus 36 and the minus 36 is this one. Okay, अगर आप इसको अगेन आप क्या करोगे, इसका माइनस 36 का बोलेगा कि फिर से इसका 1s कम्प्लीमेंट करो. ठीक है, माइनस 36 का, तो क्या होगा वैल्यू यहाँ पे 1 is 0 0 1 0 0 1 0 0. दैट मीन्स वी गेट द वैल्यू सेम. देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इसका मतलब आप यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं ये ओनली रिप्रेजेंट करता है साइन बिट को, एक्चुअल आंसर के साथ इसका कुछ भी मतलब कनेक्शन नहीं होता. सो यू कैन टेक 8 बिट 9 बिट 10 बिट 12 बिट, कोई भी बिट वैल्यू आप ले सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट इज योर 2s कॉम्प्लीमेंट. सो इन 2s कॉम्प्लीमेंट
For positive number same, that is sign bit is 0 and the next bit contain binary of number. Okay, for positive number it is same. Okay, that means my MSB is 0 or other thing are same is 0 binary number. So this is same use plus 25 में जो भी वैल्यू था यहाँ पे हमने लिख लिया. Okay, so for negative number first represent positive number, then find 1s complement, that is max 0 to 1 and 1 to 0, then 1 add 1. Okay, so here we add 1 in LSB. Okay, यहाँ पे add 1 in LSB. LSB में हम क्या करेंगे, 1 add करेंगे. So for negative number देखो यहाँ पे everything is changes to 1 is changed to 0, 0 is changed to 1, that means this is my 1s complement. Okay, so when we add plus 1, so 0 plus 1 is n and this will result the 2s complement. तो ये मेरा हो गया 2s complement. तो 2s complement में क्या होता है, in 1s complement when you add 1 then it is converted into 2s complement. So what is the benefit of using 2s complement? Okay, so I am taking the 0 value. Okay, so this is my 0 value 4 0 3 4 5 6 7 8. Okay, so total I am taking 8 bit. So this is for plus 0. So when it is changed to minus 0, okay, when we are applying 2s complement, that means first we what? First we changes it into 1s complement, so we change it into 1s complement. Okay, then we add 1. So when we add 1, it will again give the same result. Here carry is ignored. Okay, here we give the same result. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is your carry bit. So you ignore the carry bit. Okay, that means we get the same result. So for this 0 plus 0 is same as your minus 0. So this is my minus 0 value, this is my minus 0, this is my plus 0. So that is the reason we are taking always the 2s complement. We solve the mathematics in your in case of your computer, always we take the 2s complement because it will give the same value for plus 0 as well as the minus 0. Okay, for that reason we are taking 2s complement. So this is my value. Okay, so how we have a trick for that also. Okay, so what is the trick? So let us find the trick. So without going to the 2s complement, first we take the value as usual. Okay, जो भी value होगा उसको हम लिख लेंगे. Okay, 1 0 1 1 1 0 0. So this is the value and the trick is that जहाँ पे भी आप राइट साइड से स्कैन करना. ओके, यू स्कैन द डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. फ्रॉम राइट साइड कॉपी द डिजिट till find the first one. You copy the digit, that means same digit is copied till you find the first one. So this is my first one. Okay, so this one is the first from the right side. So this is my right side, I scan from this one and this is I get the first one. Okay, then max 1s complement of the rest digit. सो यू कॉपी द सेम वन. यहाँ पे जो वन था इसको हमने कॉपी कर लिया. उसके बाद जो भी वैल्यू है रेस्ट उसको क्या किया हमने 1s कॉम्प्लीमेंट कर दिया. 1 इज चेंज टू 0, 1 इज 0, 0 इज 1, 1 इज 0, 0 इज 1. So this is the very easy way you can apply to this one. Okay, but in your exam suppose step is you have to write down the step. Okay, अगर 2 मार्क होगा तो you write down the step, that means you first convert it into 1s complement then add plus 1. लेकिन जहाँ पे आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन ऐसा कुछ वैल्यू गिवन होगा तो you can directly calculate the value. Okay, so this is the trick. In that case the trick will help you. Okay, so this is the number which we have to represent using 2s complement. Okay, so how we'll quickly solve this one. So we add simply. So यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ. ठीक है, okay, so this is my number. Okay, you have to convert it into 2s complement क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 0 है इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है. सो यू मस्ट कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव नंबर बाय अप्लाइंग 2s complement. सो यहाँ पे क्या करना है, पहले राइट साइड से स्कैन करना है. जो पहले 1 है उसको एज इट इज 1 लिखना है. उसके बाद इसको क्या करना है,
आपका 1s कॉम्प्लीमेंट करना है. दैट मीन्स 0 इज चेंज टू 1, 1 इज 0, 0 इज 1, 1 इज 0, 1 इज 0, 0 is 1, 1. So this is the 2s complement for this number. Okay. Then how we represent minus 20, minus 50 using 2s complement. Okay. So this is the value of minus 15. So you can represent it by using your convert it into 16 bit also. So minus 50 is represented as this number. Okay, this is the value of minus 50 in 8 bit. Then find 16 bit representation in 1s, 2s and SMR. तो ये क्वेश्चन गिवन है कि ये 8 बिट में हमको गिवन है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना है 16 बिट में. तो एसएमआर में क्या होता है, तो एसएमआर में पहला जो हमारा एमएसबी होता है, दिस वैल्यू विल बी ओनली चेंज एंड द रेस्ट आर द सेम. तो ये 8 बिट को हम क्या करते हैं, इसको हम सिंपली 0 पुट कर देते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. सो हियर 7 0 इंसर्टेड एंड दिस वैल्यू इज सेम एज योर 50. ओके, सो दिस इज फॉर योर एसएमआर. और 1s 2s में क्या होता है, 1s में हम इसको क्या करते हैं, सारे को क्या करते हैं 1 में कन्वर्ट कर देते हैं. इन केस ऑफ योर 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट, देखो यहाँ पे सारे क्या हुआ है, यहाँ पे 1 पे कन्वर्ट हो गया है. ओके, एवरीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू 1. ओके, सो दिस इज द 16 बिट रिप्रेजेंटेशन. ओके, सो क्वेश्चन अगर गिवन होगा को 8 बिट को आपको कन्वर्ट करना है. सो ये कंफ्यूज मत होना. दिस वैल्यू माइनस 50, यहाँ पे ये 1 गिवन है, इसका मतलब ये ऑलरेडी आपका 2s कॉम्प्लीमेंट में वैल्यू आपका गिवन है. ठीक है, तो इसको आपको सिंपली क्या करना है, 1s 2s और एसएमआर में अगर 16 बिट में करना है तो आप सिंपली क्या करना, फॉर एसएमआर जो लास्ट बिट होगा एमएसबी को 1 करना है, रेस्ट आपका सेम रहेगा. लेकिन 1s 2s में क्या होगा, ये जितने भी मेरे 0 है ये सारे क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे. ओके, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. सो मेरा वैल्यू अप टू दिस इज माई 50 वैल्यू एंड दिस इज रिप्रेजेंट योर साइन बिट. ओके, तो इसलिए मैं बोली हूँ कि बार बार मैं बोली हूँ कि जितना भी आप एक्स्ट्रा बिट लीजिए ये कुछ भी आपको हैम्पर नहीं करता, बस ये रिप्रेजेंट करता है कि दिस नंबर इज ए नेगेटिव नंबर. ठीक है. For conversion of 8 bit to 16 bit, simply copy paste the sign bit for 1s and 2s complement, but for SMR we have to fill all 0 and MSB is 1. ठीक है. So this is the trick. Okay. So here I am specifying certain range of your SMR 1s 2s complement. So range of SMR is minus 2 the power n minus 1 minus 1 to the power n minus 1 minus 1. That means this is my negative range and this is the positive range. So minimum value will be this and maximum value will be this. Okay, so minimum यहाँ पे देखो 1 है, ये 8 बिट में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस वैल्यू इज माई negative value. This 1 indicate this is a negative value and this 0 indicate this is a positive value. For 1s complement, this also same, minus to the power n minus 1 minus 1 to the power n minus 1 minus 1. Okay, so this represent negative value 1 and this represent 0 is the positive value. In 2s complement, minus to the power n minus 1 range is from minus to the power n minus 1 to the power n minus 1 minus 1. सो दिस इज द रेंज. सो यहाँ पे देखो ये दोनों केस में -1 एक्स्ट्रा है लेकिन यहाँ पे नहीं है. इसका रीजन मैं आपको बता रही हूँ क्यों ऐसा है. ठीक है. सो इन 2s कॉम्प्लीमेंट द मोस्ट नेगेटिव नंबर इज दिस वन. सो 2s कॉम्प्लीमेंट में सबसे बड़ा नेगेटिव. सो व्हेन वी आर टेकिंग 8 बिट, तो ये मेरा नेगेटिव नंबर है, मोस्ट नेगेटिव नंबर. सो इट्स 2s कॉम्प्लीमेंट इज, इसका अगर हम 2s कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू 1s कॉम्प्लीमेंट देन ऐड 1. So it will give the again the same result. Okay, this will give the again same result. This number is called the odd number having no positive counterpart. तो ये जो नंबर है, ये जो हमने नंबर लिया है, इसका पॉजिटिव काउंटर पार्ट नहीं है. दैट मीन्स दिस नंबर डज नॉट हैव. तो एवरी नंबर हैव ए पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर, बट दिस नंबर डज नॉट हैव द नेगेटिव नंबर. Okay, that sorry, this number does not have the positive counterpart. So for that reason it is the range is minus to the power n minus 1. यहाँ पे -1 ही है क्योंकि इसका नेगेटिव पार्ट नहीं है. ओके, sorry, it does not have the positive part. Okay, when number having no positive counterpart. Okay,
advantages of 2s complement is for 0 we have only one representation, hence by default 2s complement is follow. Because for 0 we are represent only one representation is for 0, there is no other sign for other representation for plus 0 or minus 0. For that reason in computer 2s complement is used. Okay. And another thing is that the range is minus to the power n minus 1 because for this is our minimum value. So this does not contain your positive counterpart. For that reason it is minus to the power n minus 1. Okay. So next is, so when we are going to add two number, okay, adding 2s complement number with overflow. So अगर आप 2s कॉम्प्लीमेंट नंबर को ऐड करते हैं तो ओवरफ्लो होता है, तो ओवरफ्लो को हम कैसे यहाँ पे हम मेंटेन करते हैं इन 2s कॉम्प्लीमेंट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके. सो हियर सपोज वी कंप्यूट 4 plus 5 यूजिंग 4 bits 2s कॉम्प्लीमेंट नंबर. सपोज आई एम एडिंग 4 plus 5. ओके. So we are taking here 4 bit. Okay. So 4 plus 5 means here plus 4 and plus 5. So what is the value of plus 4? Plus 4 is 0, 1, 0, 0 and plus 5 value is 0, 1, 0, 1. Okay, this is the plus 5. That means here 0 represent these two are the positive number. Okay. So when you add this one, okay, 0, 1, 0, 0 plus 0, 1, 0, 1. When we add this number, we get 1, 0, 1, 1 is 0. So carry is 1. So here 1. Okay. So we get this number. But we all know that 4 plus 5 means 9. But when we are taking only this 4 digit, यहाँ पे overflow हो रहा है. क्या overflow हो रहा है? This 1 represent your sign number. Okay. This represent your sign bit. Okay. तो साइन बीट अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा? ये होगा -7. क्योंकि देखो यहाँ पे व्हाट इज द +7 वैल्यू? +7 इज 111. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -7? सो -7 मीन्स वी टेक द फर्स्ट वन सेम एज इट रखेंगे, इसको हम क्या करेंगे? 0, 0 करेंगे कि 1 इज कन्वर्टेड टू 0, 1 इज 0. सो आई एम अप्लाइंग द ट्रिक. ओके. सो दिस इज द -7 का जो वैल्यू है दिस इज द 001. दैट मीन्स दिस रिप्रेजेंट -7. ठीक है. आंसर में क्या आएगा आपका कंप्यूटर में? ये वैल्यू आपका आएगा -7. लेकिन एक्चुअली व्हाट वी आर गेटिंग 4 plus 5 is 9. तो हमको चाहिए था क्या? 9. ओके. सो फॉर दैट रीजन वी टेक एक्स्ट्रा बीट दैट इज योर साइन बीट. ओके. इसी वजह से हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा बीट लेते हैं साइन बीट के लिए. Here the result overflows the range of 4 bit positive 2s complement number. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा जो रिजल्ट आ रहा है ये ओवरफ्लो हो रहा है. दैट मीन्स ये एक्स्ट्रा हमको चाहिए लेकिन यहाँ पे और चाहिए बीट हमको चाहिए लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है. ठीक है. सो व्हिच प्रोड्यूसिंग एन इनकरेक्ट नेगेटिव रिजल्ट. सो इसी वजह से हमको इनकरेक्ट नेगेटिव नंबर हम यहाँ पे पा रहे हैं. ठीक है. So for computation had been done using 5 or more bits, that will be we get the actual result. So for this computation we take the extra bit which is known as your sign bit. इसी वजह से हम extra bit लेते हैं to represent the sign bit. तो यहाँ पे देखो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे 0 लिया है साइन बीट के लिए, ये मैंने 0 लिया है फॉर द साइन बीट. सो when we add this number, so we get the result +9. That means this 0 indicate this is your sign bit. That means this is my positive number and this is the number which we get. That means this value is your 9. Would have been correct. तो ये आपका करेक्ट आंसर है. To get accurate result, we add a bit called a sign extension bit. So जो bit हम extra add करते हैं, that bit is known as your sign extension bit, which copied into MSB bit position. तो sign extension bit जो होता है, ये क्या होता है? ये MSB में copy होता है. So this is my MSB, most significant bit में ये जो हमारा sign extension bit होता है, ये copy होता है. So this is the overflow condition in 2s complement. ओके. तो ओवरफ्लो को हमको क्या उसको करेक्ट करने के लिए ओवरफ्लो से हम क्या इनकरेक्ट रिजल्ट पा रहे हैं. सो when we are using when you are having overflow we get the incorrect result. So to get a correct result we take the extra bit. Okay. So that is known as your sign extension. वो जो extra bit लेते हैं उसको हम बोलते हैं sign extension. Okay.
So for that reason we are taking the extra bit. Okay. So which of the following is true range of 2s complement? So यहाँ पे different range given है, तो यह इसमें से क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा आपका ट्रू रेंज है. ओके, सो 2s कॉम्प्लीमेंट का ट्रू रेंज क्या होता है? -2n-1. ओके, फॉर नेगेटिव नंबर ये उसका रेंज है. तो यहाँ पे अगर वैल्यू हम पुट करेंगे -2n-1, तो कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं. तो इसका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा? n-1. सपोज आई एम टेकिंग n वैल्यू इज माई 8. ओके, 8-1 दैट मीन्स -7. सो -7 इज माई -128. सो रेंज क्या होगा? -128 होगा. -127 नहीं होगी, 126 नहीं होगा. दिस इज फॉर द नेगेटिव रेंज. और पॉजिटिव के लिए रेंज क्या है? So this is my positive range, to the power n-1 -1. ओके, अगर पॉजिटिव रेंज यहाँ पे नेगेटिव गिवन है, अगर पॉजिटिव रेंज होगा तो क्या होगा? टू द पावर n-1 -1. तो ये केस में क्या होगा? द वैल्यू होगा 128 -1 इज 127. तो द रेंज विल बी -128 to 127. So this is the range, negative to positive range. Okay. So this type of question will come in your exam. Okay, thank you.